Hi guys, welcome back to another episode of Happy Chirp, and I'm back on Dear Sister with the girls. Yay! काफी time हो गया. But I have been so busy with a lot of stuff that maybe we'll talk about here. And I don't know how they have been managing, but I think they've been managing pretty well. The good thing about Dear Sister is कि मुझे उसमें हर वक्त नहीं बैठना पड़ता. Yeah. So you guys can, do your own thing. So what have you guys been up to in this time that I was away? Yeah, it's a very वो वाला टाइम लाइक थोड़ा बहुत लंबा अरसा हो गया. एंड देन वैसे आपको लगता है कि आपकी क्योंकि बीच में गेस्ट एपिसोड्स आ रही होती हैं, सो पीपल विल बी लाइक हमना को देखने को मिल रहा है, बट वो एक अरसे से वो हुआ हुआ है. एंड देन यू हैड दिस टाइम ऑफ, सो उसमें एंड स्टार्टिंग में तो आई वुड से कि हमें बड़ा वो था कि हमना बाजी के बगैर मतलब हम कैसे बैठ जाएंगे, हमें पता ही नहीं था. और ऑब्वियसली एक ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन भी होती है, बट दे हैव बीन वेरी नाइस एंड दे हैव बीन लाइक कि बहुत अच्छा है, रिलेटेबल है ये. बट स्टार्टिंग में ये था कि मतलब कि हम कैसे कर लेंगे, किस तरीके से करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर बेटर इन वो होता है ना कि कॉन्वर्सेशन को डायरेक्ट करना, नेविगेट करना. हम अपनी बैठे बैठे लगे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते थे. लेकिन पता है वो तो ये था ना कि ओ पुश कम्स टू शव कि मुज़म्मिल की सर्जरी हुई है, आई हैड टू बी अवे. बट वैसे भी आई थिंक दिस वाज समथिंग दैट वाज इन द पाइपलाइन दैट वी वांटेड टू डू कि अच्छा मेरे बगैर भी आप लोग इस चीज़ को करो. And I think it was great, like मज़ा आता था जो conversations हमने की, टॉपिक हम सोचते थे कि आज हम इससे बात करेंगे. Like खुद करना for a change was nice. And learning as well, right? If I'm always there, तो So I feel like this time we spent mostly on focusing on work and then growth and all of that. So that was nice. that was nice. वो सारे aspects देखना कि what can we do, like अगर वो नहीं हो रहा, एक चीज़ नहीं है, नाउ व्हाट वी कैन डू, और फिर उस पर उस तरीके से सारी या प्रॉब्लम सॉल्विंग सारी चीज़ें सो वो कर रहे थे. एंड देन उसके अलावा बिकॉज दिस वाज द टाइम लाइक वी थॉट कि अभी हमारा वैसे भी वर्कलोड थोड़ा सा कम हुआ होगा, तो वी वुड फाइंड सम डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू डू. अभी तक सब ढूंढी है बाय द वे, अभी तक की नहीं है. अच्छा, वर्कलोड तो बहुत पहले से नहीं कम हुआ हुआ? नहीं, पहले से कम हुआ हुआ था ना. हम लोग ना हर दिन सोचते थे. अच्छा, सोचते रह गए. हम वो लोग हैं जो सोचते रहते थे और कहते थे कि अब जाएंगे अब जाएंगे अब जाएंगे. वो और आई फील लाइक काफी लोगों को ये बात पता भी है बिकॉज़ हम मेंशन भी कर चुके हैं. हाँ, कि हम वर्कआउट और जिम और बड़ा ना हेल्दी लाइफस्टाइल, क्योंकि हम इधर भी बैठ के उस दिन कह रहे थे और गमावर पे भी हम रोते रहते हैं कि हमारे लाइफस्टाइल बैलेंस नहीं है, एक्टिव नहीं है. लेकिन वो कहते हैं ना कि पहला स्टेप लेना हार्ड होता है, तो हम जा ही नहीं रहे थे. कुछ ना कुछ होता था और हम हमेशा उसको साइड पे कर देते थे कि नहीं आज नहीं जा रहे, ये नहीं करे. फिर देन वी फाइनली डिसाइडेड ब्रदर वाज लाइक हम कल जा जबरदस्ती ऐसे कल तो जाने ही जाना है हमने. एंड देन वी डिड. सो हम गए एंड देन हमने विजिट किया और देखा कि क्या जिम विजिट किया. हम देखा कि सारी इन्फॉर्मेशन ली, पर्सनल ट्रेनिंग रिलेटेड, वैसे जिम आवर्स की क्या हैं क्या नहीं है. एट फर्स्ट तो मतलब जब हम जिम गए तो आई वॉज नॉट कन्विंस्ड कि पर्सनल ट्रेनर होना ज़रूरी है, लेकिन बाय द एंड ऑफ इट जब हम पूरे टूर करके हम बाहर निकल रहे थे तो शी हैड सक्सेसफुली कन्विंस्ड अस कि नहीं, वी डू नीड पर्सनल ट्रेनिंग. अच्छा, सो डू यू थिंक दैट यू रियली नीड इट और डू यू थिंक दैट दे वर जस्ट गुड एट सेलिंग इट? नो, एट फर्स्ट आई थॉट दे वर रियली गुड एट सेलिंग इट. ये मैंने वर्दा को उस टाइम पे ही बोला था कि वी बोथ कमिंग फ्रॉम मार्केटिंग बैकग्राउंड, यहाँ पे बैठे हम अच्छे तरीके से ट्रिक हुए हैं दैट आई वाज लाइक अमेज्ड. लाइक सही बात है, प्रॉप्स टू हर, शी वॉज रियली गुड एट सेलिंग इट कि मैं ये करती हूँ एंड शी वॉज बीइंग वेरी फ्रेंडली, शी वॉज बीइंग वेरी अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा क्या गोल्स हैं, कैसे करना है, क्या नहीं है. और फिर हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुन रही थी, शी मेड अस फील हर्ड ना. सो हम सुन रहे हैं एंड देन उसके बाद कि बट यू गाइस शुड डू पर्सनल ट्रेनिंग. एंड लाइक अच्छा कैसे, क्यों, हमारे गोल्स ऐसे हैं, ये वो कहते देन आई विल मेक श्योर कि आपके वो अचीव हो रहे हैं, ये हैं वो है. एंड बाय द टाइम यू लाइक नहीं, हाँ हमें तो पर्सनल ट्रेनर ही चाहिए क्योंकि हम तो नहीं कर सकते. जिम knowing कि मैं कभी पर्सनल ट्रेनिंग नहीं लूंगी, खुद ही सीखूंगी. No, but why not? Because of the cost? Because it's like not affordable. No, at the moment. Because I never went for a personal trainer because I would be like कि यार इतने ज़्यादा पैसे और देना पड़ेंगे. इतने ज़्यादा पैसे कौन दे? And then again, obviously, it feels like with all those workout videos out there, you can easily learn. हाँ, मतलब आपको यही होता है. No, मुझे ये है कि I know that money is worth it. Getting a personal trainer makes all the difference. It does. But like
how much do you want to spend, आपने वे करना होता है ना. मेरे लिए था कि मैं खुद ही मैं इतने पैसे नहीं दूंगी, बस जो हो जाएगा ना मुझसे मैं वही कर लूँगी. So that's how I always did my और वहाँ जाते हुए भी ऑब्वियसली हमारा ये था कि वी हैव अ बजट. लाइक वी हैव टू सी कि अगर हम वो अपने ऊपर स्पेंड कर रहे हैं तो यू नो वो उसी के अराउंड हो रहा हो. हम वहाँ जाते हुए सोचे थे क्योंकि व्हाट आर द वेज वी कैन गेट दैट एडमिशन फी यू नो कितने लोग ये वो हम वो वाली सारी इन्फॉर्मेशन गए थे. बट ऑब्वियसली द अदर पर्सन वाज रियली गुड एट देयर जॉब एंड दे यू नो. और फिर बाय द टाइम आई ऑल्सो रियलाइज कि वो तो मार्केटिंग में बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमें सेल आउट कर दिया वो चीज़. बट दूसरी चीज़ ये कि for someone like me who has never done like any workout session, gym नहीं कभी किया, कोई equipment नहीं यूज़ किया, बस एक सेट करके गोल और फिर चले जाना and then not knowing what to do or what works for me right now, what to do is तो वो बहुत स्केरी था. And then she told me, you know, उसने गोल्स पूछे कि किस तरीके से करने हैं. And then she was like, you know, we can easily do that और ये है और वो करके. तो now you know कि someone can help you. Maybe you can take only 15 sessions with them. Like there were plans के बहुत बड़े भी थे, but you can just get an idea initially and then you can go in and get the other package and then go every day. And then मतलब also कि given that I have some back issues, तो मुझे हमेशा से वो एक fear होता था कि यार मतलब what if I snap my back or something bad happens. And that's actually a very legitimate concern. Exactly. So she was so nice about it कि even when we came back to the office, she was still texting us and telling me, bro. Sales. Really, मैंने कहा वर्दा यार हम दोनों मार्केटिंग बैकग्राउंड से हुआ क्या. Every trainer that I have ever talked to अभी तक उसने हमेशा whenever I told her or him my condition तो वो आगे से बोलता है अच्छा I'll search about it, I'll tell you, I'll let you know, हम कर लेंगे ये वो. But she was like मुझे पता है ये क्या है and I'll make it happen for you. So that was something that I was told. यहाँ बीच में इतना मजे से हुआ like हम कल आके भी ना बाकियों को भी बिठा के बताए थे. We were hardly there for like 15 minutes but हमने सारा विजिट किया तो she was telling us everything ना. but there was like बीच में मेरी ना बैक की इश्यूज हैं, so what if I am not able to do certain exercises and ये वो. And suddenly she was like, I will make you do it. She's good at her job. I'm sure she's not just good at selling, but she's good as a trainer. But she's also a national level power lifter. अच्छा. But then you can put your trust in people like these ना. आप थोड़ा trust भी कर लेते हो कि चलो she will manage me. And हम जैसे लोगों के लिए कोई strict instructor ही काफी है. हमें चाहिए होता है. So are you guys going for it then? Yes. Have you decided? Yes, we are. Okay, Yes, that's we are nice. going for it. We haven't started yet. Congratulations! I'm very proud of you guys. Finally taking that step after years. Yeah. रूस तो नाराज हो जाएगी. कहेगी हमने इतना अच्छा मैंने वर्दा के साथ प्लानिंग की है. अभी उसको बताएंगे हमने. अच्छा. But what have you been up to? You have also been doing yoga. Yeah, I've been up to a lot of stuff. Yoga मैंने start की थी in the start of June. And मैंने start ही इसलिए की थी because I've heard that yoga is good like for your mental health and your physical health both. And I knew that it's great. But after doing it, I feel like it's still so underrated. And जब मैंने इनिशियली स्टार्ट की तो हर योगा के एंड में देयर इज़ दिस थिंग कॉल्ड शवासना जिसमें वो आपको मेडिटेट कराते हैं. एंड आई हैव डन अदर काइंड्स ऑफ मेडिटेशन बिफोर बट इट्स ऑलवेज लाइक अकेले खुद से. बट बिकॉज इट वॉज दैट क्लास एंड इट्स लाइक विद द प्रोफेशनल सो उसका जो आउटकम था इट वॉज वेरी डिफरेंट एंड आई एक्चुअली फेल्ट इट सो मच मोर. So it was very eye-opening because it actually did really help me with my mental health. At the end of every shavasana, I was in tears. So it was working because it was like आपने basically आपका जो trauma होता है या आपकी जो feelings होती हैं या feelings basically वो आपकी body में store हो रही होती है. If you're not releasing them, you are storing them in different parts of your body. इसलिए वो कहते हैं lot of the times आपको अगर कहीं दर्द हो रही है it's mostly because you are पुटिंग इट देयर. जैसे कहते हैं ना आपको स्ट्रेस जब होता है तो आपके कंधों और कमर में दर्द होता है बिकॉज आपने वो स्टोर कर लिया हुआ है स्ट्रेस. यू आर नॉट रिलीजिंग इट, इट्स इन योर बॉडी. सो योगा रियली हेल्प्स यू लाइक रिलीज ऑल दैट. इट कम्स ऑन टू द सर्फेस. सो वो मुझे फील हुआ दैट येस यू नो ऑल द थिंग्स लाइक इट वॉज अ वेरी हेल्दी वे ऑफ फीलिंग दोज फीलिंग्स एंड रिलीजिंग दोज फीलिंग्स. फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो आई फाउंड आउट कि for a lot of people, when they first start doing yoga, they get angry. And the reason for that is that they're storing their
एंगर. सो सम पीपल आर स्टोरिंग सॉरो, तो वो जो है वो थोड़ा सा ऑन द एज फील करते हैं व्हेन दे फर्स्ट स्टार्ट, क्योंकि वो सरफेस पे आना शुरू हो जाता है. तो छोटी छोटी बातों पे रोना, छोटी छोटी बातों में इरिटेबल होना. कुछ लोग एंग्री और स्नैप करना शुरू हो जाते हैं व्हेन दे Because they have been storing anger. Yes, and it's beginning to come out, and then it takes some time that you do it enough times That it releases. that you start feeling very very calm. And one of the most fascinating things that I learned about yoga was that हम अपनी डेली लाइफ में इतनी शैलो ब्रीदिंग करते हैं एंड योगा रियली टॉट मी हाउ टू लाइक breathe and use my lungs at their full capacity and breathe better, and you know, and then obviously उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बैलेंस है, मेंटल हेल्थ के अदर इश्यूज हैं. लाइक ऑब्वियसली टीचर्स यू बैलेंस, डिफरेंट पोजेज में आप बैलेंस होते हो. एंड वन थिंग दैट मुझे कल किसी का DM आया, एक लड़की का. शी सेड कि योगा, आई स्टार्ट डूइंग योगा एंड इट चेंज्ड माई लाइफ. एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रियलाइज वाज कि व्हेन आई एम फीलिंग टू मच, या मैं एंग्जाइटी है या स्ट्रेस है, तो आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू बैलेंस बिकॉज माई बॉडी इज़ नॉट calm on the inside. If it's under stress, या आपकी बॉडी के अंदर chaos है ना, तो you can't balance. Oh my god, that makes so much sense. So there were days when you're stressed out, so you'll find it difficult to balance anyway. And that is what you strive for your body to do. And then when you balance and then you get that calm. तो उसने ये भी कहा कि जो मेरे लोग साथ योगा कर रहे थे, तो उसमें मुझे देख के पता चल जाता था who is your mind is diverted, like who is stressed out today, or who is not feeling too well today, because your body doesn't. So, and the calmer you are, the better you balance. So, and it's a cycle, right? And then the more balance you learn how to do, the calmer you sort of. It's so interesting that we think कि हमने अगर emotions दबा दिए हैं, या you know, we haven't reacted to them, so they are gone. Yeah, they're not But gone. They're somewhere. Gone. Yeah, they're in your body. Yeah, that's why it's important to feel and release both. तो कहते हैं योगा एक्चुअली योगा की हिस्ट्री है कि I'm not a yoga expert. I just started doing yoga, but I've been reading up on it, so I know a few things here and there. I wouldn't be an expert, but कि yoga actually started as a healing practice. So उसकी जो initial वो है, it's not physical. उसकी initial जो उसकी beginning ही है, it started as a healing practice for your mind and for different parts of your body. कि अच्छा इधर दर्द हो रहा है, इधर हो रहा है, फलाना. Okay. तो yeah, and yoga is I think around 5,000 years old, I think. Okay. Yeah, so and it's like way to connecting to God as well, na, for some meditation people. भी है, हाँ. But it's not a religion. It's a healing and meditation practice. तो हाँ, I've been doing that. वो मेरा शुरू में काफ़ी मिस हो गया because of मुज़म्मिल सर्जरी, तो मैंने काफ़ी अपनी क्लासेस स्किप की. सर्जरी हो रही थी और रिकवरी हो रही थी, और मेरे पास बीच में I did not have help with Raphael as well. तो फिर जाहिर है I had to skip a lot of the sessions, and I had 2 people to take care of at home. Yeah. But so there was that, और योगा से ही रिलेटेड है. सो बिफोर द सर्जरी जो मैं योगा सेशंस में जाती थी, उसमें जो हम शवासना करते थे, तो आई वुड क्राई बिकॉज आई हैड दिस सर्जरी थिंग इन माई माइंड. तो मैं हमेशा रोती थी बिकॉज आई वॉज सो एंग्शियस, यू नो, कि क्या होगा, क्या होने वाला है, और मैं बस रोती थी. एंड देन जब मेरा लेकिन हम हर शवासना के एंड में थैंक यू भी करते हैं, और मैं उस पर भी थैंक यू करती थी. लेकिन उससे पहले जब हम फील कर रहे होते थे और वो, तो आई यूज्ड टू क्राई अ बिट व्हेन यू फुली ग्राउंड योरसेल्फ. मतलब आप बस ग्रैटिट्यूड सोचते हो चीज़ों के बारे में और थैंक यू करते हो. सो बेसिकली हम इट्स लाइक अ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस एट द एंड. Okay. सो जब सर्जरी हो गई, थिंग्स गॉट बेटर एंड आई फाइनली got back to yoga, तो I started crying not in the first part of the challenge, लेकिन जब मैं thank you करती थी तब मुझे आंसू आते थे because I was feeling more grateful. हाँ, and पहले I was feeling more anxious. और जो शवासना का जो मेन पर्पस है वो ये कि you lie flat on the ground like a dead body. उसको कहते भी corpse pose है. So the idea is to completely let go of everything, let go of your anxiety, let go of your control, and put it all on God. कि अच्छा छोड़ दिया है, God's plan. So that's why I used to cry पहले उस stage में when I used to ground myself. Yeah. And then I started crying on the gratitude part. Now I don't cry. But it's such a good way to deal with everything, you know. हम like
बहुत सारे मेथड्स अलग भी हैं कि यू वर्क ऑन ग्रैटिट्यूड, यू वर्क ऑन राइटिंग योर इमोशंस डाउन, फीलिंग्स, रिएक्ट, रिस्पॉन्ड. बट आई थिंक जिस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रही हैं, योगा इज कंबाइनिंग एवरीथिंग नाउ. Like, you are feeling at the same time, you're releasing at the same time, and you're being grateful and grounding yourself Yeah. at the same time, and it's good for your body and mind as well. Yeah. Why aren't we all doing it already? Yeah, that's what my yoga instructor said. I don't understand why everybody doesn't do yoga. And I think if somebody is doing it, it will be very hard for them if they don't do it anymore. Like, हाँ. yeah, You जिस get so तरीके से used आप to it, बता I रही थी think, ना है कि Your body starts to crave. हाँ, और ये भी मुझे मेरी इंस्ट्रक्टर ने ही पहले कहा था कि you will at one point start to crave yoga when you don't do it. And it's true, when I'm not doing it, I crave that breathing, I crave that movement and वो. But खैर. Yeah, I think you can leave any workout exercise and still be okay with it, because आप एक गोल को जहन में रख के कर रहे होते हो. But with yoga, because now you're It's a practice. Yeah, so वो आपको it's like habit, like है अब करना है, बहुत Part of your जरूरी है to life. deal with things. Yeah. तो आपकी सारी dealing is now with yoga. So And I आप- really think it depends, like लोगों की क्या intention है with yoga. So आप ये क्लास के साथ do you? अच्छा. Yeah, Okay. there's So have like you ever like worked out before alone ever? मैं तो workout पहले से करती रही हूँ अच्छा. ना. Do you guys हाँ. think like अकेले. is it hard working out alone या फिर in a class या how? Because I've done both. I think classes are always better. With people, it's always better. But I think it's a preference. So some people might like doing, क्योंकि alone भी अच्छा लगता है. I think, और मुझे लगता है start करते हुए you need that motivation and support you from need others people as around well. you. Yeah, You need to, inspiration all the time. Actually, I started with classes. जो initial workout था, and then I did. हाँ, and once you know you आप इतने वो हो जाते हो कि you know what works for you, तो आप अकेले भी कर सकते हो, and then it actually becomes your thing to do. कि, Yeah, now, your time, हाँ, your alone time, and your thing. Also, I and- feel like you go very easy when you're alone. Like, there's no Pressure. time. आप अपने घर में, हाँ, there's no pressure. आप घर में कभी भी कर सकते हो, so you'll be like, अच्छा बाद में कर लेते हैं. and all. But Because that then happens you with don't me. end up doing. मैं यही करती रहती हूँ With कि अच्छा classes, बाद it's में more करूँगी. discipline. Yeah, that's why when you have a trainer or you Yeah. have a class to attend, so then you really like have to do it and have to Yeah. go, and especially when you've paid, because classes का normally होता है because there are slots, so होता है कि you've always prepaid. Yeah. Now that you've prepaid, you're just like, अब oh तो shit. करना ही पड़ेगा यार. अब तो I have to show up. I can't paid for miss. this. हाँ, बिल्कुल. हाँ. तो खैर, the surgery and then the recovery and then I had a lot of like household projects. मैंने राफेल का रूम सेट Oh, किया. yeah, we saw that so cute. और मैंने अपने घर में थोड़े बहुत changes किए. Then my in-laws were coming back, so I had to like set and organize things in the way that they like, और उनके लिए चीज़ें ला के रखना और वो सारा. तो मैंने घर को वो किया, and I really enjoyed all of that. I feel like after having a lot of like जाने से पहले मैंने कितनी videos record किए हैं और कितना काम crazy year, I would say. crazy. Yeah. So after all were of that, always so this was good. Like everything Yeah. was internal. घर के अंदर अपना Slow and- yeah. चीज़ें That's so ठीक करना, important though. therapy Yeah, that's need very to. important. Yeah, like living that life, slow mornings, chai, yoga, cleaning. Wow. Yeah, and The perfect you know life, that I actually. love that kind of Yeah, stuff. yeah. So I've enjoyed and embraced this little period. बट वो इतना कि कंप्लेसेंसी ना हो जाए. जिस तरह आज उठ के मुझे ये पॉडकास्ट करने लगा था इतना मुश्किल, जबकि इट्स सच ए नॉर्मल पार्ट ऑफ माई लाइफ अदरवाइज. Yeah. बट आपको वो थोड़ी सी कंप्लेसेंसी होना शुरू हो Like, जाती जब है. आप थोड़ा इतना वो enjoy कर रहे होते हो अपने स्लो टाइम में, तो with work you have to get up and get ready as well. हाँ. But when you're doing your own thing, you don't have to be like कि चलो अब मुझे तैयार होने के लिए अलग से टाइम निकालना हाँ. पड़ेगा. Oh, I got a haircut also. Yeah, I think it looks everybody really can nice. see. Very short now. आपने कितने 5 inches? You went Yeah, 5 inches. 4 or 5. His hair was very long. I think as long as, but that's. I'm also about to get Did you then I was regret it though? Like most of us do that. काट के तो फिर we're like, I don't Yeah, ever no. regret cutting it short. वैसे. I didn't regret it. एक तो मैंने पहले काटे हैं. प्लस अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, I hope it stays same. मेरे बाल जल्दी उग जाते हैं. So I hope इस दफ़ा भी वही होगा. तो मुझे होता है कि अच्छा उग जाएंगे. And also one thing,
that I've learned is it's important to change your physical self regularly. Agree. Because you should not get too attached to your looks. Yes. And too comfortable in being pretty or looking perfect or looking a certain way. So sometimes I try, because mushkil hota hai, because you do get attached. You do get attached with makeup, and you do get attached with long hair or And certain change is gender. always weird. It's odd. Yeah, it's आपको नहीं अच्छी लगती. हाँ. Do you guys intentionally experiment कि अब intentionally करना है, like हर I 6 used to. महीने में you have to do it. I used to, not anymore, but I know that you do that with your Yeah. glasses हाँ, though. you do. Yeah, I do it intentionally, be it my hair or be it my looks. Like you can't, आप मेरी 6 महीने की पहले की पिक्चर्स अच्छा. देखें और 6 महीने की बाद की देखें ना, you will feel that difference because I intentionally do it. और मैं अपने बालों के साथ तो बहुत खेलती हूँ. Like I हाँ, change it's color, change length, and I usually like shorter hairs ना. तो मैं चेंज करती रहती हूँ, जैसे बड़े होते हैं मैं कटवा देती हूँ. I used to do that Yeah. a lot with my hair. मैं dye बहुत different, कभी red करा रही हूँ, कभी कुछ करा रही हूँ, but then बाल इतने खराब हो गए कि I was like शौक तो खैर है, but damage बहुत हो गया था. Like मतलब मुझे होता है कि अच्छा स्पेशली अगर मुझे थोड़ा सा डर लग रहा हो ना कि यार मैं शॉर्ट हेयर में शायद इतनी अच्छी ना लगूँ जितनी अभी लग रही हूँ, तो मुझे तो ओके, देन आई नीड टू डू इट. Yeah. Because then it's fine. Like I have to get comfortable with the fact that it doesn't matter if I'm not looking good all the time. It's fine, whatever. मैं तो जब भी हेयर कट कराने भी जाऊँ ना, तो द गर्ल इज ऑलवेज लाइक कि आप लंबी हैं, आपको तो सूट भी नहीं करेगा, तो फिर मैं रुक जाती हूँ. आई एम लाइक ओके फाइन. No, and you don't have to. Like if it's हर किसी का थोड़ी होता है. Like if you want to, and like I said, मैंने पहले रखे हुए हैं तो. हाँ, एंड आई थिंक इसमें वो भी चीज़ आ जाती है ना कि यू बिकम कंफर्टेबल विद इट ओवर टाइम. लाइक क्योंकि आप पहले बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हो ना कि चेंज की वजह से यू आर नॉट सीइंग इट दैट वे. तो आपका जब इनिशियली लाइक आप जाते हो, आपके बाल काट दिए जाते हैं, आप जब फर्स्ट लुक देखते हो यू फील लाइक यूर डिफरेंट. सो यू लाइक ये क्या हो गया, मतलब वो. बट ओवर टाइम यू लाइक अच्छा ये तो मुझे अच्छे लग रहे हैं, आई कैन डू इट, एंड इट्स ऑल अबाउट कैरिंग इट वेल. मैंने बस कंफर्ट जोन से निकलते रहना चाहिए. Don't get too attached to your comfort. दैट इज ट्रू. That is Yeah, एक change is क्या कहते हैं, change is the only two things are inevitable. एक death, आपकी life की एक certainty है that you will die. Yeah. There is no other certainty, and the other certainty is change. Change is inevitable. It is going to happen because that's how the world works. Yeah. So it's best to be comfortable with changing and the idea of changing. And Yeah. how are you वैसे towards change? Do you resist change or do you embrace change? I always resist change. Like I am that person who will. मतलब I have not changed my glasses since I think the frame, the shape of the frame since I was born. I mean तब से ही लगी हुई भी है और तब से ही मैंने change भी नहीं किया. Only because I feel like it won't look nice. कैसी लगूंगी, क्या है. Again, the same with my hair. So I resist change a lot. मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद. I think for me, the idea of change definitely makes me feel a little bit uneasy. But I've seen कि over time I've been able to embrace change like very well. I take change very well, but just the idea of it कि अच्छा change करना है कोई चीज़, वो आपको शुरू में बहुत uneasy वो फील कराती है कि नहीं, मतलब अच्छा ठीक है चल रहा है इतने अरसे से ऐसे ही है, तो आगे भी जाने देते हैं, बाल ठीक लग रहे हैं, पता है कि किस तरीके से स्टाइल करनी है, या ये फ्रेम सूट कर रहे हैं ना. Okay, but you guys are talking about change that is in your control. So that's change that are you willing to make a change? Yeah. But my question is that when things change on their own, how जैसा होता है ना कि ग्रेजुएशन हो गई या सब अलग हो रहे हैं, सब दूर हो रहे हैं, सब बिजी हो रहे हैं. This is just one example. Or just change of A levels ख़त्म हो गया, अब यूनिवर्सिटी शुरू होगी, FSC ख़त्म हो गया, अब कॉलेज शुरू हो गया, या I don't know, whatever, like हम मूव कर रहे हैं, things that just happen, या ब्रेकअप हो गया, या किसी से लड़ाई हो गई. So that sort of change that is not in your control but happens or has to happen. How do you deal with that sort of change?
आई थिंक मेरे साथ ये है कि आई एम वेरी अडेप्टेबल वैसे तो। और जब चेंज हो चुका है उसके बाद हो रहा है तो आई हैव अडेप्टेड टू इट, बट प्रॉब्लम विद मी इज कि इनर कॉन्फ्लिक्ट फिर भी चल रहा होता है। पैनिक की सिचुएशन होती है कि नहीं वो जो एंजाइटी होती है ना उससे पहले तक वो बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत पहले तक भी रहती है। और मेरे साथ ऐसा भी रहता है कि काफ़ी अरसे तक वो मेरे साथ रहती है, दैट आई डोंट फील इंटरनल वो वाली चीज़ कि नहीं यार, मतलब मैं थोड़ी सी वो हो जाती हूँ इफीसी कि नहीं ये क्या हो गया, कैसे है ये वो। बट वैसे अगर ओवरऑल मैं अपनी पर्सनैलिटी देखूँ तो मैंने वैसे अडेप्ट कर लिया होता है। आई एम ओके टू इट, और आई एम डूइंग थिंग्स नाउ विद द न्यू रूटीन एंड आई एम वेरी गुड एट अडेप्टिंग थिंग्स और ये वो। लेकिन आई थिंक बिकॉज आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन एंड आई एसोसिएट इमोशंस विद थिंग्स एज वेल, यू नो ये मेरी लाइफ का पार्ट है, नहीं मैं इन लोगों से मिलती हूँ, या ये हो रहा है अभी मेरी ज़िंदगी में, या ये लोग मेरी ज़िंदगी में हैं और अब नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ये नहीं वो करके। सो वो काफ़ी अरसे तक मुझे मेंटली बहुत परेशान करता है और किसी चीज़ में नहीं पता चल रहा। मतलब इट्स नॉट लाइक यू आर अनेबल टू सेटल विद द न्यू चेंज, बट मेंटली यू आर a bit like वो uneasy सी फीलिंग चलती रहती है कि ना हाँ या एंड देन सम कुछ वक्त बाद मुझे अपने आप को बैठ के बोलना पड़ता है कि बस करो, हो गया, move on mentally also ना, you have been doing it, like you have accepted the change, आप उस पे सेटल इन कर गए हो, चीज़ें हो रही हैं तो then just mentally accept it as well and then just move on. So मैं इस तरीके से I deal with it, like yeah. What about you? Like जिस वक्त it's happening at that time I'll have major anxiety. I'll be like, oh my god, the world is over, oh my god, ये क्या हो रहा है. But as soon as it happens, I'm always that person who's very composed and I get along with whatever happens very easily. मेरे लिए बहुत, I feel like that's also because of how my childhood was. Like मेरे लिए बहुत आसान था, हर वक्त कुछ ना कुछ change हो रहा होता था. Like my dad's moving इधर उधर, ये हो रहा है वो हो रहा है. So I was always like कि अच्छा खैर है, कोई बात नहीं. एंड इवन नाउ इन माई हाउस आई एम दैट पर्सन जो कि बिकॉज हमारे पेरेंट्स आई फील लाइक उस तरह के होते हैं ना कि दे डोंट लाइक चेंज एट ऑल, उनको तो बिल्कुल नहीं पसंद होता. सो आई एम ऑलवेज दैट पर्सन हुज लाइक अच्छा खैर है, हो गया, कोई बात नहीं, लेट्स गेट यूज्ड टू इट एंड स्टफ. सो नाउ आई एम वेरी गुड एट इट, आई फील लाइक. अच्छा, सो हार्ड रिलेट हेयर. मेरा ये है कि बिकॉज अबू आर्मी में थे, सो वी वर ऑलवेज मूविंग लाइक एवरी 3 years, every 2 years. तो मेरा तो ये हो गया कि इफ़ आई स्टे इन द सेम काइंड ऑफ लाइफ और सेम सिचुएशन फॉर टू लॉन्ग एंड इवन विद द सेम पीपल, आई गेट अनहैप्पी. सो आई वॉन्ट थिंग्स टू चेंज. लाइक आई रिमेंबर जब मैं LMDC में थी और मेरे 4 साल वहाँ गुजर गए थे एंड आई वॉज मूविंग बैक. And I remember that most people at that time were like, oh, ख़त्म हो रहा है, हम ग्रेजुएट कर रहे हैं, बहुत I don't want things to change, I want कि बस हम ऐसे ही रहें पूरी ज़िंदगी और यही रहे. But I just wanted to go back. not because I wasn't happy. I was very happy. But I knew that if I continued, you won't be. And it will stop me. Like I want to grow or I want to change. I want to experience the next thing because I think I know when I'm ready for things to change. Yeah. So I'm ready to embrace the change. Achha, this chapter is over. Okay, I'm graduating now. It's done. I'm not gonna say, oh, काश एक और साल होता यूनी का, या हम लोग एक साल और चीज़ें कर ले. I am just not that person. Which my friends, I told you, my friends are so weird. But I think because I've grown up like this, I crave change and I like spontaneity and I like to like even घर पे like मुझे हर चीज़ बात होती है अच्छा मैं look change कर लूँ या कुछ, because we've moved so much that I can't get used to one place. It bores me. I can't. I think I'm a bit of both because मेरी भी लाइफ में होता है कि हमने चेंज तो किया था. Like we were living in Karachi, then we were in Islamabad, then we were in Faisalabad, then we were in Gujarat. Like वो चीज़ हो रही थी, चेंज आ रहा था. But I had like कुछ एक होता है ना कि good 4 to 5 years everywhere. So तो हम settle down कर जाते थे. We have accepted that life और आप उससे अटैच हो जाते हो. But मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम है that मुझे चेंज भी चाहिए होता है. लाइक सो आई ट्राई टू डू दैट इंटेंशनली विद फिजिकल ये वो सारी चीज़ें कि यू नो कुछ तो चेंज. हाँ, चेंज इट्स लाइक आई लाइक चेंज. इट्स नॉट लाइक आई डोंट लाइक चेंज. आई लाइक चेंज कि यू नो होना चाहिए, थोड़ा एक्सप्लोर करो. अब ये हो गया ठीक है चलो व्हाट्स नेक्स्ट और ये वो सारी चीज़ें. बट आई थिंक आई एम मोर ओपन टू चेंज व्हेन इट कम्स टू मी. लाइक
not situations. Yeah, like, but I'm more, it makes me more easy when it's around the situation, you know, around the people that I really like. When change is happening in their life and I'm like, you know, ये क्या मतलब है ये वो करके, so that's Lack of control, yeah, right? so that makes me very, you know, a little, I feel like we're totally opposite in this. With me, I am more resistant to change within me. Anything that's related to me and around me, Yeah. I'll be totally okay with wow. it. जिस तरह अभी आपने बोला था, तो like during my graduation year, तो I was very happy and I was excited for what's about to come, and everybody else was like, oh आखिरी साल है, मैं तो ये कहती no थी more कि मैं तो ये memories. कहती थी कि यार it's great कि we're having a great time right now and it's ending now because you're leaving at a very sweet spot and a very Exactly sweet. me. Why do you want things to collapse Yeah. and then this to end? Because then it becomes a bad memory. Yeah. You know, I want this to be like the best memory. Like, okay, we love each other. We have a great time. We live together. And it's good that, okay, but all good things come to an end. And I feel like things should end good, not bad. I mean, that's what I would want. अगर मेरी एक friend है who is moving away, I wouldn't want that she's moving away at a time when I have a bad relationship with her. I'd rather that she moves away at a time I have a Good the relationship. best relationship with her, कि मुझे उसके जाने का बहुत दुख हो लेकिन वो अच्छा टाइम है चेंज के लिए. yeah. You know? But do you think it has to do with the personality who are more realistic and practical as well? Like, you know, कि at the time, क्योंकि it's, if someone is practical, so they know that the change is gonna come. So उन्होंने पहले से ही mind prepare Somebody किया who हुआ है, like, you know. realizes that nothing stays forever. हाँ, You know? yeah. So having that Maybe realistic friendships or- Yes, expectation. it is that. like, It's that. yeah. And वो ये कहते हैं कि and because unfortunately or fortunately मेरी life में इतने changes आए that were out of my control and I experienced so many changes. Just the fact that we had to move all the time. I had to let go of my friends in school every time and start again, and it made me realize and sort of learn that change is good. तो कहते हैं ना एक It there's really a is. saying, Yeah, yeah. change is good. Yeah. And change is hard, but it always leads Yeah. to better things. Yeah. So You वो एक आपका realize कि क्या कुछ बेहतर हो सकता है. and I think when it happens enough times तो you learn and realize कि अच्छा ही होगा ना, इसके बाद अच्छा ही होगा. So it's okay. It's okay. Change है, oh change is happening. And I guess that's fine. But it also depends on the kind of change. Obviously, if it's a very bad change, like someone really close to you dying, so obviously that's not a sort of change that Yeah. you would want to embrace. But change is inevitable. So there is no point of resisting it. It's better to just be like, okay, God's plan, change. Yeah. हाँ. But do you think ये आपका first reaction होता है when change is happening? नहीं. इफ इट्स अ लाइक जैसे देखो कुछ है चेंज जो कि ना नेसेसरीली गुड है ना नेसेसरीली बैड है, जिसकी मैंने बार बार एग्जांपल दी, ग्रेजुएशन, शादी, बच्चे, ठीक है ना, ये ऐसे चेंज है जो होना है. अब आप इसको कभी बैड चेंज नहीं कहोगे बिकॉज यू आर ग्रेजुएटिंग, दैट्स अ गुड थिंग. इट्स गुड यू हैवंट फेल्ड एंड यू हैव टू डू वन मोर ईयर, यू नो. बट ऑब्वियसली इट्स हार्ड बिकॉज यू आर अटैच टू योर कॉलेज और उस Yeah. तरह से. तो उस तरह के चेंजेस में मेरा इनिशियल रिएक्शन यही होता है कि गुड चेंज, नेक्स्ट चैप्टर. बट ऑब्वियसली इफ इट्स एन अनफॉर्चुनेट इवेंट तो आई ऑब्वियसली हैव टू counsel myself that you know this is a change that for some, because those changes you can justify to yourself. These changes में again आपको अपने आप को समझाना पड़ता है कि मुझे नहीं पता क्यों और इसमें क्या बेहतरी है, लेकिन ये हो रहा है और मुझे छोड़ना पड़ेगा. तो obviously I'm not like, oh good great next chapter, that is definitely not my वो, and I'm definitely not easily embracing those changes. But I alhamdulillah, I think अभी तो it's been a while since I've mashallah alhamdulillah experienced something like that. But in times that I did, I was eventually able to feel like that, because I know some people who will forever regret. They will never be able to come to terms with the change, no matter how many years. But I was able to, like in a few months or so, you know, अपना थोड़ा spiritual होके अल्लाह मियाँ से वो करके और वही होके कि अच्छा अल्लाह मियाँ पे छोड़ दो और कोई बेहतरी होगी, come to terms with certain, like वो why did this happen to me वाली जो चीज़ है वो लोगों की काफ़ी अरसे तक उनके में वो रह जाती है कि वैसे ही क्यों नहीं रही चीज़ें. बट आई थिंक आई एम एबल टू
deal with that. I don't know if it's related to that or not, but अभी आप जिस तरीके से कही थी मेरे जहन में बस एक चीज़ आई थी, like some people find it easy, not that I'm blaming anyone or being or trying to offend anyone, but some people take that, वो ना उनके लिए easy होता है to remain in that zone, victim zone. You know, things have happened और why में ही रह जाएंगे कि why it happened, why this is happening to me, and वो से बाहर नहीं आ पाते. They get in that mental trap and उसके बरक्स personality like you want, like, you know, ठीक है right now स्टार्टिंग में आपको मुश्किल हो रही है टू एक्सेप्ट दैट चेंज, बट आफ्टर सम टाइम यू विल बी लाइक वो हो गया है, व्हाट कैन आई डू नाउ, नेक्स्ट स्टेप. सो द थिंग लाइक some people are stuck at the whys while some people are like what can I do now. Yeah, like how do I, वहाँ पे पर्सनैलिटी का डिफरेंस आ जाता है आई थिंक. yeah, and I think इसको कहते हैं ना resilience, कि how do you like come out and step out of that whatever you've been through and विक्टिम मेंटालिटी में ना रहना और कहना कि अच्छा चलो ठीक है हुआ. एंड आई वुड से दैट इट टेक्स टाइम एंड दैट्स कम्प्लीटली नेचुरल, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू like come out of it. And somehow if it was your fault, so I think when it's your fault then it's more difficult because then there is another guilt attached, and the forgiving yourself part is a whole another वो तो thing. बहुत ही अलग मुश्किल काम है दुनिया का सबसे. बट इफ़ इट्स नॉट योर फॉल्ट तो इट्स अ बिट मोर लाइक फिर आपका यही होता है कि आप कहते हो बस अल्लाह की मर्जी है, होना था ठीक है यार, आगे चलो, मूव ऑन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड यू नो figure out what to do with your life. But it's definitely not an easy thing to do. Not at all. Yeah. I think again मैं फिर से योगा पे आऊँगी, but उसका जो योगा में actually this is what they teach you at the end to again let go. जो भी हुआ, like even हमारे एक एंड वाली जो मेडिटेशन है उसमें बिकॉज वो साथ साथ बोल रही होती है तो she said के stop asking why me or why did this happen and just let it go and just let it go and with every breath let it go with every breath. तो it teaches you कि अच्छा यार जो भी हुआ बस छोड़ दो, there is no point. Like I have a question here कि at that moment how do you block out all that noise that's in your head? I mean when you're practicing it, so because मेरे साथ ये होता है कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हो या अगर आप कुछ भी, there's a lot of noise that's there and to control that it's pretty hard. So like how did you do that? Yeah, I think again it takes practice, but and मैंने पहले भी जब किया है तो अकेले मुझे बहुत मुश्किल लगता है, but when I'm there in the environment with everyone, with her saying those things and there is no sensory like stimulation at the time, तो it's better. But if I try to do it at home in my environment where I know उधर मेरा बच्चा है, उधर मेरा husband है, उधर ये है फलाना है, it's hard. And I do think that maybe some people can do that when they sort of achieve that level where they're able to block things out like more easily. So I mean, yeah, I think the voice of the instructor is the biggest help in that, like because at every point the other person is telling you to let it go, let it go, let it go, and then you're like, you know, you have to, वो आपके जहन में आवाज़ गूंज रही है and constantly like she keeps bringing you back to the present, like she will constantly be like she will keep bringing you back to this moment and your breath and your breath and your body and your body. तो वो आप सोच भी रहे तो फिर आपको वो वापस लेके आती है, कहती है कि वो उसमें बोलती भी है कि okay if your thoughts have wandered then go back to your breath and then you go back to your breath and then so कहती है the breath, then your mind follows the breath and the breath follows the body. There's some, I don't know, something. So वो एक भी एक पूरी thing है. Mindfulness that we've talked about many times is to be there in that very present moment. It's a thing. Yeah. And I think it takes practice. But you know, like if it's something you want to personally work on or try, I think literally the best thing to do is literally start out 2 minutes or 3 minutes कि आप कहीं पे भी बैठे हुए हो. जिस तरह कभी कभार मैं अपने लिविंग रूम में बैठी हुई होती हूँ तो मैं इसको यूज़ कर रही होती हूँ, यूँ कर रही होती हूँ, फिर मैं 2 मिनट के लिए छोड़ती हूँ बस, फिर मैं I just come back to the present, leave all this and see कि अच्छा आवाज़ें क्या आ रही हैं, तुम बाहर से
चिड़ियों की आवाज़ें आ रही होती हैं, कहीं बाहर कोई सफाई हो रही है तो वो झाड़ू की आवाज़ें आ रही होती हैं. One thing that बारिश हो रही really है तो उसकी helped me during this was like writing and writing your feelings down. I feel like that helps a lot as well. That like helps a lot as well. currently, how are you feeling? Yeah. So that helps a lot. As well. Yeah. I think engaging all of your senses in अच्छा मैं एक most of चीज़ the सोच रही senses, थी yeah. हाउ आर यू फीलिंग वाली बात से कि अ लॉट ऑफ द टाइम्स ना लाइक व्हेन वी ऑल कम इन द ऑफिस और हम लोगों की ऑब्वियसली एवरीबडी कम्स इन विद अ मूड एंड विद अ फीलिंग एंड हु नोज़ घर पे क्या हुआ या घर पे नहीं भी कुछ भी हुआ या यू जस्ट वोक अप फीलिंग बिची टुडे और यू आर PMSing और वट एवर. ठीक है. सो आई वाज लाइक कि यार फिर एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर कमिंग विद ऑल ऑफ दैट आपसे कोई बात करे लेकिन आप आज इरिटेबल हो. ठीक है. तो आप उससे रिएक्ट नहीं कर रहे. आप कह रहे हो अच्छा यार मैंने क्या कर दिया, इससे क्या हो गया है या जो भी. So I thought about this and then I don't know if we should do it. कि in the morning we should do a check-in. So whenever we come in, so I'll ask everyone, okay, let's check in. How are you feeling today? So that all our interactions during that day Are according to that. Yeah, and are more sensitive towards each other and also just That's better, right? Yeah. Because आपको होता है कभी कभार कि यार ये मुझसे सीधा मुँह आज क्यों नहीं बात कर रहा. ऑल्दो हमारे ऑफिस में ऐसे नहीं होता. वी आर ऑल वेरी नाइस एंड काइंड विद ईच अदर. अल्लाह का बहुत शुक्र है. बट इट्स स्टिल इम्पॉर्टेंट यू नो you because you don't know one day somebody is feeling so sensitive and snaps at you or lashes out. तो you'll be like यार क्या like the other person is really mean or rude, ये क्या कर दिया. But if you've checked in the morning तो it's better because everybody knows how is everyone. Oh, that's such a nice I feel like we Sort should do of, that. yeah. We should do that. like, and I think it will help the other person as well who is feeling those feelings के सारी आप because sometimes it's more in our head और हम उसको explain भी नहीं कर पा रहे होते, खुद accept भी नहीं कर रहे होते कि you know it's happening. but वो checklist और वो check in करने से you'll be like हाँ मतलब आज. And I'll tell you why I came up with this because one day I was feeling super irritable और मैंने आप लोगों से कोई बात की and I told you guys something and I was like and then I looked at those messages and I read what I said and I was like you know like I sound a bit irritable and you know maybe and I know that I'm irritable today but I'm not irritated at them but it probably looks to them that I'm irritated at them but I'm not. But if we had checked in the morning then they would know that I'm in an irritable mood today and it's not because of them, it's just that I am in an irritable mood today because of whatever XYZ. You know, and then I was like it's not fair that this is coming out like this and they're probably like oh like we pissed our boss off today. So जो ये वाली चीज़ है only leads to like miscommunications and वो तो इससे मुझे थॉट आई थी कि अगर इन लोगों को पता होता तो शायद this would not sound the way that it's sounding at the moment. Or I feel like this is very important. इससे we know what's happening in the other person's mind, so even we can be more careful. कि किस तरह बात करनी है उससे या क्या. yeah. Superb idea. अच्छा. So yeah, we were I don't know how we came to change and all but interesting थी conversations. So there was something that you guys wanted to talk about. Sweet. Yeah, we had this in mind that you know let's have a fun and chat discussion today and talk about our sweet escapes, you know, the things that we do when we have to, you know, बस सबको बंद करके things that you know we go to watch something maybe or have some sort of activities that we do. So we wanted to talk about that because I think that will be more relatable to everyone because everyone has some sort of thing. Sweet escape. कि, you know, we do this or we do that. So we wanted to discuss that. What do you do with the मेरी थोड़ी सी सैड स्टोरी है so I would like to share that. I used to love swimming. Like swimming was my escape and रात को जो टाइमिंग जिस क्लब में जाती होती थी that was 8 to 10 and that was so soothing for me क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा लोग नहीं होते थे and वो open था and मतलब I loved going there और I used to just for a moment just forget everything else in the world and just swim. तो and then I got a back issue थोड़ा सा जिसकी वजह से the doctor banned swimming on me. He's like you can't even go into the water anymore because of the pressure and because of all of that. So that used to be my sweet escape and all of a sudden I was robbed of that time and I didn't know what to do and क्या करूँ. So now it's just laying down and watching YouTube videos. It's as simple as that. So that's my sweet escape. What about you guys? Yeah,
whenever I have to escape my world, I go into someone else's. Like I read a book. Like, you know, go into someone else's mind and be like, you know, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, to go into that character. I've always done that since I was a child. You know, हर रात को कोई कहानी पढ़नी है या खुद बनानी है, and then because I have to escape everything that's going around me. So I will create a character. I will put वो तो ना कि लाइफ देना कि ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी. So going into someone else's life, like thinking about everything from someone else's mind इज़ माई escape. लाइक यू नो कि मैं अभी अपने बारे में तो और अपने लेंस से या अपनी लाइफ के बारे में नहीं कर सकती, एंड आई ऑब्वियसली नीड अ ब्रेक. सो मेरे लिए रीडिंग अ बुक और यू नो रीडिंग एनी थिंग, लाइक मोस्टली आई प्रेफर फिक्शन बिकॉज इट हेल्प्स अ लॉट. बट उसके बाद रीडिंग की इतनी हैबिट डेवलप होगी कि कोई भी बुक पकड़ ली और बस 10-15 मिनट के लिए पढ़ लिया, एंड देन यू आर जस्ट रीडिंग इट एंड यू आर जस्ट, आपको नहीं पता आगे पीछे क्या हो रहा है. और मेरे साथ ऐसा होता है लिटरली व्हेन आई एम रीडिंग इट, कोई मेरे साथ बैठ के भी बात कर रहा होगा, मुझे उसकी आवाज़ नहीं आती. Because You're so into it. I'm so into it. Like when I'm reading it, so I block everything and I'm just like this. You know, मैं ये पढ़ रही हूँ, अभी मैं हूँ और ये कहानी है और कोई नहीं है. बाकी दुनिया नहीं exist करती. नहीं exist करती. That is a nice escape. So I'm very good at zoning out. Like you know, मैं अपने आप को वहाँ से अलग कर लेती हूँ. I'm also very good at zoning out, but just not when I should. Yeah, so I do that. What do you do? यार मैंने ना रिसेंटली रियलाइज़ किया है कि हैविंग ए स्वीट एस्केप इज़ अ लग्जरी व्हेन यू हैव अ चाइल्ड. बिकॉज यू नो लाइक एस्केप तो एक और चीज़ है, बट आई थिंक मैंने पहले भी कहीं ये बात की थी दैट especially when you don't have help, चलो help हो तो फिर भी, but even then like when you have a child you don't even have the time to process something properly. Like if you कोई grief भी या कोई emotion भी, because you know you are constantly managing this other person and you constantly have to be present and do Things whatever for them, things for them. So I think it's definitely a luxury for moms. Yeah. But that also reaffirms that I think mothers को अपने लिए टाइम निकालना और कुछ हेल्दी करना बहुत ज़रूरी है. प्रायोरिटी चाहे दुनिया के किसी और इंसान के लाइफ में ना हो, लेकिन मदर्स आयरॉनिकली जिनको बिल्कुल नहीं मिलता उन्हें सबसे ज़्यादा उस चीज़ की लाइक ज़रूरत है. यही पूछना चाहिए थी आपसे, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंट बीइंग अ मॉम इज लाइक full-time thing. Yeah. Right? You're constantly thinking about the other person, and the other person obviously cannot say things or tell you. अभी तो वो बहुत छोटा है, like वो नहीं आपको बता सकते, तो आप constantly उसके लिए फिक्र कर रहे हो कि अच्छा क्या करना क्या नहीं करना. But to be able to do things for them, you also need to have like थोड़ा सा अपना वो कि you know मैंने थोड़ा सा किया अपने आप को डिस्कनेक्ट, और आई स्पेंड लाइक मे बी 10 minutes 15 minutes जिस तरीके से आप कहेंगे कि बस यू नो माइंडफुली ब्रीदिंग एंड हियरिंग साउंड्स के हो क्या रहा है, विच हेल्प्स यू कम बैक. और आपको पता है कि बच्चों के बाद आपका जो क्या उसे कहते हैं सेंसरी ओवरलोड इतना ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज देयर आर ऑलवेज साउंड्स. बच्चे की आवाज़, बच्चे कुछ करने की आवाज़, लगा हुआ ना 2 सेकेंड जो आपको नहीं मिलते. और जब बच्चा सोया हुआ होता है तब आपको फील होता है कि ओ कि बस खामोशी तब आपको फील होती है, बिकॉज देर इज़ ऑलवेज साउंड, बिकॉज देर डूइंग समथिंग और देर सेइंग समथिंग और देर एक्साइटेड और देर क्राइंग और देर थ्रोइंग अ टैंट्रम और देर टॉयज और देर. उस दिन मैंने वो पोस्ट जब लगाई थी ओवर स्टिमुलेशन वाली जो आपकी माई so why you were like that's me. Yeah, it's definitely a luxury for moms then though. लेकिन and I think if they can just take out like 2 to 5 minutes, like I think what it doesn't have to be a long time. What they can do, like yeah, like just when he goes to sleep तब तो I usually watch TV. That's the thing, like तब मैं TV देखती हूँ और I do that. But उसके अलावा I think I really do enjoy skincare a lot. पहले नहीं था, this is actually a recent thing, but I do enjoy it, and I also feel कि बिकॉज मेरी लाइफ अभी रिसेंटली स्लो हुई है तो फिर मुझे मौका मिल रहा है, बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग राइट. तो ठीक है, बच्चा है और बीच में हेल्प भी नहीं थी, फिर हेल्प भी है बच्चे के साथ, और इन लॉज भी आ गए हैं तो ही इज़ रियली बिजी स्पेंडिंग टाइम विद देम एज वेल. तो अब मुझे थोड़ा सा
टाइम मिलता है टू do all डू ऑल दैट. सो आई एंजॉय. पहले होता था स्किन केयर कर रही थी बट बस किया बिकॉज करना है, नॉट बिकॉज टू मजा आ फील रहा है. गुड. या सो वो चीज़ आई थिंक आई रियली एंजॉय दैट. एंड देन आई राइट, बट राइटिंग का मेरे इट्स लेस ऑफ एन एस्केप, इट्स मोर ऑफ अ dealing. राइटिंग. So if I'm feeling something तो I'll be dealing with that through writing. तो escape के लिए हाँ I think workout में करी थी, that is really good, or watching TV or skincare. Do you have like a skincare routine now? I have a skincare routine now after a very long time in my life. Which was completely like पहले भी थोड़ा बहुत था but in my first year of being a mom तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था. Obviously, था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था. What is skincare? तो वो but मेरा एक बहुत damaging sweet escape था during my postpartum year, यानी पहला साल. That was eating, and this is a very common thing, so maybe I'll talk about it here because I wish somebody talked about it before with me. कि ना when you are पूरा दिन बच्चे के साथ और उसको देख रहे हो और उसे अटेंड कर रहे हो, तो वैसे ही ना आपका you're not eating properly, तो आपके मील्स भी स्किप हो रहे हैं, आप थोड़ा बहुत खा रहे हो, बीच में आपकी चाय भी ठंडी हो रही है. you're not, food is something that again becomes a luxury जब आपका बच्चा होता है. फूड एंड बाथरूम आपको टाइम नहीं मिलता, एंड हॉट मील्स नहीं मिलते, और बस फूड इज़ नॉट समथिंग जिसका आपका कोई रूटीन रह जाता है या आप उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो. मे बी सम पीपल आर एबल टू डू दैट, आई वाज़न्ट एबल टू डू दैट. आई डिड नॉट हैव इनफ हेल्प स्टार्ट में. एंड व्हाट दैट सॉर्ट ऑफ डिड वाज कि जब एंड अपेरेंटली हैपेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल. सो इन माई प्रेगनेंसी आई गेन लाइक 8 to 8 kgs, which is not a lot, क्योंकि जो 6 kgs जो है ना वो आपका वाटर और बेबी और वो सारा मिला के प्लेसेंटा उसी का होता है. तो जब आप बर्थ देते हो ना तो यू इंस्टेंटली ड्रॉप ऑल दैट. तो आई डेंट गेन दैट मच वेट. एंड में मैंने फिर एक्स्ट्रा 2 kgs हैं, तब जाके वो 8 या 9 kgs हो गया था, एंड दैट्स इट. व्हेन आई हैड द बेबी आई ड्रॉप्ड द वेट. फिर क्या हुआ कि देन जब व्हेन आई वाज लुकिंग आफ्टर द बेबी और जब मेरा मील्स वर ऑल ओवर द प्लेस, तो एक चीज़ होती है इमोशनल ईटिंग जो कि नॉर्मली होती है बिंज ईटिंग. सो बिकॉज when you get so worked up after the whole day, और जब आप बच्चे को सुला के फारिग होते हो, so the one thing that you want now is food, which is good food, yani food that you want to eat. And most of the time it's like McDonald's or Coke or something sweet or something that will satisfy you here. So it's usually a lot of calories and then you Junk eat food. so much. You eat so much. And also when you are breastfeeding तो आपकी appetite बहुत ज़्यादा हुई हुई होती है because सारा कुछ बच्चा ले रहा होता है, आपके अंदर कुछ भी नहीं होता. So that's why breastfeeding helps you lose weight. So start में when you're breastfeeding you don't even gain the weight, but your appetite increases. And then you stop breastfeeding, but your appetite is increased, you're emotionally eating, you're binge eating, and then that's when you gain all the weight. And I would still say that जो food है ना वो मेरा भी एक sweet escape है जिसको फिर मैं वो करती हूँ कि नहीं like emotional eating नहीं करनी. So how do you manage all of this now? I think awareness, because मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ ये हुआ है. So how did you get to know about it, like कि ये emotional eating कर रही हूँ मैं, like how do you realize it? How did I realize this? Good question. Because recently May से तो आपने I think actively changes ले आना शुरू कर दिए थे. That I saw कि you know you started May हाँ, जो onward. meals आप Yeah, meals and then you know the workout and the अच्छा so yoga. हाँ when I started doing the diet, उसमें डाइट में आई रियलाइज्ड कि जब मैं अपसेट होती हूँ ना तो मुझे खाने का दिल चाहता है. उसमें आई रियलाइज्ड कि आई रियलाइज्ड हाउ, क्योंकि मेरी डाइट चल रही थी लेकिन मुझे डाइट तब तक इफेक्ट नहीं करती थी जब तक मेरा मूड ख़राब नहीं होता था. गेट इट? देन आई डिड नॉट वांट टू डू द डाइट. डाइट सही जा रही है, आई एम डूइंग द डाइट, समथिंग हैपेंड दैट annoyed me and suddenly the diet that was completely fine all day जो कि मैं कर भी सकती थी अभी कंटिन्यू, लेकिन अब suddenly मुझे वो खाना नहीं खाना. मूड ख़राब है ना, मैं नहीं मूड अच्छा करना है ना, so basically मूड अच्छा करने के लिए मूड खराब you give to yourself. हाँ अब Treating yourself इट्स लाइक मूड ख़राब है और अब मैं ये खाऊं,
Oh yeah. मुझे फ्राइज खाना है. So that's when I realized that my food consumption or unhealthy food consumption is very related to my mood, and it's emotional eating, and that's why I do it. मैं उस पर binge करती हूँ when I'm upset because I'm just like I'm just gonna eat. So वो चीज़ मुझे डाइट करने से realize हुई that I have an emotional eating problem, and then तो फिर अब जब भी मैं trigger होती हूँ emotionally और मेरा दिल चाहता है तो फिर मैं उस चीज़ को फिर नहीं करती. फिर मुझे पता होता है कि I'm not hungry, I'm just Angry or annoyed. Yeah, I think awareness इसमें बहुत बड़ा factor है. फिर like a lot of people don't know कि you know you are emotionally eating. Emotional eating. Then again, I feel like opposite भी होता है. Opposite भी कुछ होता है. लोगों के साथ बिल्कुल उनकी भूख बिल्कुल मर जाती है अगर कुछ इस तरह होता है. हाँ, there's those people also that don't eat their feelings. दोनों extremes बुरी हैं, I feel like. हाँ, दोनों extremes. Yeah. So और अब ये हुआ है कि उस चीज़ की awareness कर करके अब मेरा वो trigger भी कम हो गया है. How do you don't get emotionally One triggered. very important question: how do you not eat? Like, where does that control? Like, please, ये बताएं हमें. हाँ, अच्छा सवाल है. आपको याद है कल हम जिम विजिट करके आई थी और फिर हमने कल क्या खाया था? ये हमें बताना चाहिए या नहीं? हम जिम विजिट करके आए and the first thing that we did was कि अब तो जिम जाना है तो अब KFC मंगवा. See this. So there's revenge eating as well. Oh, by the way, that was also a very big part of this thing क्योंकि वो revenge ही होता है basically. वो ये होता है कि oh my god, I've had such a shitty day. Yeah. Now to counter that I have to eat shitty day, something I good. have to eat something good. Revenge. और एक और चीज़ भी होती है revenge eating में कि आपके ना आपने for example आपके घर में 8:30 बजे खाना लग गया. कोई ऐसा खाना बना था जो आपको पसंद नहीं है तो लेकिन आपने खा लिया whatever घर में बना था. वो खाया ना मैं कुछ और भी अब आप 10:30-11 बजे तक उठे हो, ठीक है, तो आपको ऐसे भूख नहीं लग रही लेकिन क्योंकि आपका खाना अच्छा नहीं है तो आप रिवेंज में ऑर्डर करोगे और आप कुछ खाओगे एंड यू आर जस्ट consuming calories. but I think I'm only It's revenge eating revenge. these days. It's a real thing, and like you end up gaining weight, and obviously it's not just about weight, it's just unhealthy. It's unhealthy. Like eating at 10 or 11 is also very Yeah, it is. हाँ. True. Yeah. तो Wow, the things that we don't know about her. But then, how do you control it? Achha, Like, how do I how control? I think for me, you know, it's really about how important something is becoming for you. जिस तरह अब मेरे लिए I used to feel tired and I used to feel bloated and I used to feel like energy नहीं है and it made me sad because I'm not that person. I've been a very energetic person and I've been somebody who used to work out so much and who would fit in small size और इस तरह की चीज़ें. और तो वो फिर आपको एक पॉइंट पे होता है कि यार like I feel so shitty all the time because I'm so unhealthy and I feel like that for me was a very big deal. So for me it was just like and also कि बहुत हो गया ना. हाँ. बहुत कर लिया ना. Where do you draw the line then? Obviously it's going to be hard. Obviously you can't expect something like this to not be hard. And then you have to tell yourself, no, I think it's just willpower, yaar. Like you have to fight it and just be like, ये तो मैंने चीज़ determination और willpower की बात है. आप में है तो है, आप में नहीं है तो फिर you should build it. Yeah. नहीं है and you know it's very important to draw the line because वरना तो आप उसमें क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मे बी आपको उस टाइम पहले रियलाइज़ हो रहा था कि यू नो दिस इज़ रॉन्ग बट यू डिडंट मस्टर अप द करेज और विल टू डू इट और स्टॉप इट और फिर एक बाद में टाइम ऐसा आएगा देन यू आर ओके विद इट. या एंड ऑल्सो द आइडिया जो मैं सोचती हूँ दैट इट्स मच मोर डिफिकल्ट टू बी फिट द ओल्डर यू ग्रो. सो वो चीज़ मुझे होती थी कि यार I am becoming old. I am turning 30. I do already have a son. I have given birth once. That already affects my body in so many ways. And I cannot not do it now. Because then I'm... अपने ही नुकसान है ना. अपने लिए मुश्किल से मुश्किल करी जा रही हूँ. The best time is actually now. Because I'm not getting any younger. I'm only getting older. So... That is so true. Do I want to do it later when I find it more difficult? Or do I want to do it now when it's relatively easier?
So and it's true. true because I look at myself 2 years back and doing the exact same thing was so much easier. Yeah, things were so much easier. अब मैं भी यही सोचती हूँ यूनिवर्सिटी वाले टाइम में I used to walk. हाँ, इतना ज़्यादा वॉक करते थे, सुबह से इतना शाम ज़्यादा तक। वॉक करते थे, and I was also very active. But अब तो same. ऐसे मुझसे 15 मिनट से ज़्यादा वॉक करवाओ. कोविड ने तो आई फील लाइक कोविड ने भी बहुत ज़्यादा इसमें प्ले किया Yeah. रोल, जहाँ पे हम लेजी हो गए हैं, हाँ. we're inside all the time and I think Stamina I है agree ही with नहीं। you 100% Yeah. कि वो आप it really affected you और आप पूरा दिन बैठ के खाते ही रहते थे कोविड में क्या करना था और ट्रेंड्स भी तो cook- चल रहे होते cook थे भी ना, तो बहुत किया हमने। ट्रेंड्स चलने लग Cook जाते किया और थे. खाया ना, बस खाना ही आप खाना। किचन में ही हो, आपकी सारा टाइम किचन में गुजर रहा है, नई रेसिपीज वायरल हो जा रही हैं, सब ट्राई कर रहे हैं उसको. आप आई रिमेम्बर खाएंगे. कि कोविड के टाइम पे हमें जितने भी आते थे बिकॉज कुछ हो ही नहीं रहा था ना, सो हमें जितने भी वो आ रहे थे पार्टनरशिप्स, पेड पार्टनरशिप्स, दे वर जस्ट फूड रिलेटेड बिकॉज फूड वॉज द ओनली थिंग दैट वाज सेलिंग, कुकिंग वॉज द ओनली थिंग पीपल वर डूइंग. कपड़े तो कोई खरीद नहीं रहा था, जाना कहाँ है. हाँ एग्जैक्टली. हाँ, और उस टाइम पे पीपल बिकेम कॉन्शियस एज वेल कि अभी जाने नहीं है, वो मतलब कि अभी ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हमें. हाँ वो चीज़ आ गई थी सिर्फ इनिशियल खा डेज में, लेते हैं, लेकिन सीख खाना लेते तो हैं, ऐसा था कि उस पर तो सर्वाइव करना. Yes. खाना तो खाना. खाने Grocery के वही भी कहते हैं आई कि रही थी। ग्रोसरी आइटम्स की जो सेल है इट इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली ड्यूरिंग. एंड उसमें भी आई थिंक वी डिड अ लॉट ऑफ इमोशनल ईटिंग. कितना दुनिया में सब खराब है. सब हम घर में बंद पड़े हैं, ब्राउनीज खाना तो बनाओ, कॉफी भी थी, सब कुछ एंड था. ऑनेस्टली यार आप बोर होते हो तो आप क्या करोगे घर में. फिर कोई कह देता है आपके घर के फैमिली का, चलो ये खाते हैं, फ्राइज बनाए. चलो ये बना लेते वही हैं आज, खुशी चलो होती ये थी। खा लेते हैं, चलो आप कोल्ड कॉफी पी लेते हैं, अब आइसक्रीम खा लेते हैं. And I think हम सब देसी का show love, with food. Yeah. So Yeah. So food, and plus I also feel कि Varda, when you get into this like diet and nutrition वाली जो journey है, और फिर जब आप पढ़ना शुरू करते हो ना, तो आपको तब अपने पहले तो यू गेट उस food से भी, हाँ. कि हम क्या करते रहे हैं. हाँ, so that's also just like what the hell have I been eating, like why have I been treating my बेचारी body like this, it deserves much better. क्योंकि आपको पता ही नहीं होता ना, आप mindlessly खा रहे हो. जब आप mindful eating करते हो and what you're consuming, you're just like I think I deserve better. और मैंने बताया था कि मेरे साथ तो इतना ये भी हुआ ना कि ये चीज़ें इतनी खा ली थी कि I was done with them. So I didn't even really feel like eating fast food or fries or whatever, any of this. I really enjoyed the. So I feel like अगर किसी ने डाइट पे जाना है तो एक दफ़ा अपना दिल भरे और फिर डाइट पे जाए, because then you will appreciate the change कि अच्छा कुछ different body में जा रहा है. So हाँ, I really think that you don't have to be very strict if that's not the kind of person you are, but it's important to have some level of thought यार कि आप क्या कर रहे हो अपने साथ. Yeah, just That's mindfully important. living. Yeah. In any aspect. And of always your the life, first yeah. step is going to be hard, but then it's gonna get easier. Yeah. So yeah. But it's also very easy to slide back. कि किया बड़े जोश में पहले and then Like yeah, it's very hard कि आप एक स्टेप आगे लो लेकिन 4 स्टेप पीछे आना बहुत आसान है. हाँ वो ज़्यादा आसान है. And then you end up gaining more weight than you lost. हाँ, that Yeah. happens. Yeah, Uff, Allah, mindful living and healthy living is such a it's a It's a hard task. such a task. But वो कहते हैं कि you do it for like 4 months and then it becomes your lifestyle. Because फिर आपको फिर होता है कि after 4 months when you start doing those things again, आप उस ट्रैप में जा रहे होते हो तो आपको फील होता है कि आपकी बॉडी इज़ नॉट डूइंग वेल बिकॉज यू, क्योंकि एनर्जी में डिफरेंस फील होता है. जब आप अच्छा खाना खाते हो तो आपकी बॉडी की जो एनर्जी होती है वो इतनी अच्छी होती है. देन व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग क्रैप एंड यू रियलाइज, जो मैंने कहा था कि मुझे रियलाइज होता था कि यार मेरी बॉडी क्या एनर्जी है, दिस इज़ नॉट एनर्जी. Yeah. Yeah. Just because I'm able to do things all day doesn't mean that I'm feeling energized. There's no point of doing things all day if you feel like shit. Yeah. You should feel energized when you're doing things आपकी all day. प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है. So true. So true. बस हम जा रहे हैं जिम. जा रहे हैं. It's time to work on ourselves. वैसे भी. About time actually. हाँ. Yeah. So क्या स्वीट एस्केप था मेरा? आपने बताया था कि वैसे TV and food, which is a really bad one. I would not encourage anybody to make that their and skincare.
which I've recently started. And I think I also like to sort and organize and do things जब मुझे हाँ, it really helps me as well. I think. Same. सारी चीजें निकाल के फेंक देती हूँ और फिर उसको दोबारा से as long as it's not clothes, by the way. I don't know, I hate anything to do with clothes. अगर मुझे कपड़े धोने पड़े, बहुत धोए हैं मैंने, अगर मुझे इस्त्री करने पड़े, फोल्ड करने पड़े, सॉर्ट करने पड़े, I hate it so much. But मैं बाकी और कुछ भी anything to do with clothes I don't like. But any other kind of organizing and वो I would love to do. That helps. I do this organizing and वो सारी चीज़ें when I think I'm angry. Like, so to control that ना मैं चीज़ें सही करना शुरू कर देती हूँ, सब करना शुरू करती हूँ, by the end of it I'm calm. अच्छा, मेरा एंगर में नहीं होता, मेरा होता है कि अगर माइंड में क्लटर है ना, समझ नहीं आ रही what's going on, too many things happening in life, feeling too many things, too many things to do, too much going on, तो सब छोड़ के मेरा होता है कि मैं इस टास्क चीज़ें ऑर्गेनाइज करना शुरू करती हूँ. when things feel cluttered, somehow my mind feels decluttered. Yeah. So decluttering physically declutters my mind. That actually makes a lot of sense. अगर आपके सामने इस तरह होगा तो you just feel, मुझे तो OCD होता है, so I'm just like पहले ये इसके साथ डील कर लेते हैं, फिर अपने साथ डील. That's why I also can't work in an environment which is messy. So I have to, which I think is right for you as well. Like I have to make sure कि environment neat हो, फिर तो जब पहले वो ठीक हो जाए, then हम इसके साथ डील करेंगे. जब मैं पढ़ने लगती थी ना, तो I had to fix my room first because मैं मुझसे पढ़ा नहीं जाता था. Everything was a mess, तो मुझसे होता नहीं था. Like I couldn't focus on like my. I mean, I look at some boys and they're like in a messy room, in a messy car, eating and studying, and I cannot do that. I mean. No. I don't know how. एक होता है कि हर चीज़ को करने से पहले आपको वो होता है ना कि एक इन्वायरमेंट सेट करना पड़ता है. वहीं पे बैठे बैठे एकदम से उठ के कुछ और करने लग जाओ तो ना आपको एनर्जी में शिफ्ट नजर आया ना, वो डिवाइड नहीं रहता. You're in the middle of chaos. अब जिस तरीके से कोविड में क्लासेस होती थी, व्हेन आप क्लासेस लेने जाते थे, आप उठते थे, बाकायदा तैयार होते थे, यू वुड पिक योर बुक्स, आप रजिस्टर्स जो भी होते थे आप चले जाते. कोविड में क्या हो गया था कि इधर ही लैपटॉप पड़ा हुआ है, यहीं पे खोल के छोड़ दिया मैंने, यहीं पे क्लास ले लूंगी और साथ ही सो जाऊंगी. सो वो क्लास में क्या होता था नहीं समझ में. एग्जैक्टली. वो ये कहते हैं ना कि यू हैव टू वर्क फ्रॉम होम में भी कहते हैं कि यार ऑफिस अलग होता कि आप उठ के बिस्तर से अलग जाओ ताकि आपका, बिकॉज योर माइंड शिफ्ट्स एज वेल. वो ये डीक्लटर वाली बात है, वरना आप उसी माइंड सेट में होते हो. बिस्तर वाले, सोने वाले, उधर ही मीटिंग. हाँ, मैंने इसीलिए ना अपने कमरे में अलहदा साइड पे एक ऑफिस छोटा सा बना लिया, सो दैट बिकॉज व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो होम मेरा यही होता था, बिकॉज आई हैव मिंग एज वेल, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, कभी पेरेंट्स के साथ लैपटॉप लेके बैठी हुई हूँ, कभी कुछ, तो इट वाज ऑल्सो मिक्सड अप, देयर वाज नो डिवाइड. तो आई वाज लाइक कि देयर नीड्स टू बी वन बिटवीन योर प्रोफेशनल एंड योर फैमिली लाइफ या योर पर्सनल लाइफ. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगेन दैट डिड अफेक्ट माई प्रोडक्टिविटी इन अ वेरी गुड वे कि आई यूज्ड टू focus more on work because मुझे पता होता था कि अच्छा this time is for my work and this time is to sit with family and just spend time with them. So it's not always all together, उनके साथ ही बैठ के कर रहे हो. So that sort of, it's very important कि आप उसको dedicated time and space दो. Organize your life and organize your mind. आज का lesson. हाँ. Yeah. It was like really nice discussion. कहाँ से कहाँ. Sweet Escape के अलावा do you had something else in mind? Yeah, movies that you guys मतलब favorite movies of all time. Of all time. Yeah, I've watched a lot of Bollywood growing up. So मेरी तो सारी guilty pleasures में सारी Bollywood. I used to love Sing is King. मैं ना रोज आके देखती होती थी. ये वो है ना. एक सेकेंड. वेट. क्या है वो गाना, जी करदा. आई थिंक उस टाइम की सारी मूवीज आर सो गुड. सो मेरे ना फेजेस आते हैं और मैं जाती हूँ और मैं उन्हीं जोन में चली जाती हूँ. मैं वही मूवीज दोबारा देखती रहती हूँ इंस्टेड ऑफ वॉचिंग एनी न्यू कंटेंट. अच्छा, वैसे मैंने अभी आप लोगों ने भूल भुलैया 2 देखी? नहीं. या मैंने देखी है. आई डिडंट लाइक एंजॉय दैट. I was actually wondering कि is it us who have like grown up and we don't really think those jokes are funny anymore, या उनकी क्वालिटी कम हो गई है? नहीं, आई because back then they were very funny. नहीं, आई थिंक एक चीज़ होती है आइकॉनिक हो जाती है बहुत ज़्यादा. नाउ एनीथिंग टू मैच अप टू दैट लेवल इज ऑलवेज गोइंग टू डिसअपॉइंट यू. लाइक कि नहीं, अब
इफ यू थिंक लुक एट भूल भुलैया अक्षय कुमार की और वो एक आइकॉनिक मूवी है, राइट? एंड नाउ टू थिंक यू नो अक्षय नहीं है उसमें, पहले से ही आप डिसअपॉइंटेड हैं, देन यू लाइक अच्छा जो आप कह रहे हैं आप ना चाहते हुए भी कंपेयर करने लग जाते हैं. बट आई ऑल्सो फील मे बी इट्स अबाउट आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरली अबाउट मेच्योरिटी, बिकॉज हमारे से बहुत बड़े लोग भी उस तरह का ह्यूमर उस टाइम पे देख रहे थे, दे वर एंजॉयिंग इट. आई जस्ट फील लाइक कॉमेडी हैज़ इट्स waves in the sense कि that was the humor of the time. जो आपका वेलकम वाला नहीं ह्यूमर और अजीब स्टूपिड ह्यूमर, हाँ वो उस टाइम का जो ह्यूमर था ना, वो जो कंफ्यूजन वाली फिल्म्स होती थी, उसको लगता है वो उसका बाप है, उसको लगता है उसकी मामू है, और आई डोंट नो इसको आधी बात पता है उसको आधी बात पता है. दोस इंडियन मूवीज लाइक वो फॉर्मूला इंडियन मूवीज थी एंड we all really enjoyed them. But when I watch it now, I'm like, ew, what is this? I can't even laugh. So I think I think it had its time where it was just so fun because it was so refreshing. I feel like कि वो इतनी movies उस तरह की बन गई कि now it's just like you don't find it funny anymore. Like अब उस तरह की movie आती है and I'm just like एटलीस्ट मुझे तो हंसी नहीं आती है ना. नो आई थिंक हमने इतना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर लिया, इतनी तरह तरह का कर लिया. नाउ यू अब जब आप कोई चीज़ नहीं देख रहे होते तो यू आर गोइंग विद द एक्सपेक्टेशन कि मुझे कोई वाव फैक्टर मिलेगा इसमें, यू नो समथिंग दैट आई हैवंट सीन, समथिंग दैट आई हैवंट हर्ड. अगर मुझे वही जोक्स मिलेंगे, वही स्टोरी लाइन मिलेगी, सो यू विल बी लाइक मतलब आई डोंट एंजॉय इट एनीमोर. देयर वाज अ टाइम व्हेन आई डिड बट नाउ आई डोंट एंजॉय. लेकिन एक मूवी है जिसके जोक्स कभी पुराने नहीं होते हैं, कभी खुशी कभी गम. अभी भी मुझे उस पर हंसी आती है, उसके सेम जोक्स, सेम लेम जोक्स, बड़ी मजाकी हो, बड़ी मजाकी. आई लाफ एट दैट सीन सो मच. हैव यू गाइस सीन हेरा फेरी? ओह या वो भी मुझे अभी तक बहुत वो भी बाबू भैया वाली ना, बाबू भैया वाली. या आई लाइक जब भी मेट एज वेल आल्सो. हाँ उसके भी जोक्स अच्छे हैं. आई थिंक बस वेलकम और वो वाले जो सारे एक जैसे थे उनके हम उस टाइम पे बहुत सारे होते थे. हंगामा मूवी थी, एक चुपके चुपके है जिसमें शाहिद कपूर एक्ट्स एज लाइक यू नो डम, वो डेफ पर्सन, बट वो होता नहीं है. इट्स वेरी फनी. लाइक आई स्टिल एक्चुअली वॉच्ड इट टुगेदर. अभी कुछ दिनों पहले भी हमने देखी है, बहुत मजे किया. एंड देन और भी थी इस तरह की. देयर वाज हलचल है, हाउसफुल या आई थिंक मोस्टली अक्षय की फिल्म्स जो. हाँ he was that person who did these comic movies. गोलमाल मस्ती पता नहीं. so many. So अब मैंने तो ग्रोइंग अप सिर्फ बॉलीवुड देखा है. लाइक आई वाज़न्ट इनटू हॉलीवुड अ लॉट. लाइक सब देख रहे हैं फैम. और उस टाइम पे वो ट्रेंड भी तो एक आया था अचानक से कि सिनेमास खुले थे एंड देन एवरीबडी वाज देयर ऑल द टाइम. एंड देन उस टाइम पे यू हैड एक्सेस टू ऑल दीज इंडियन कंटेंट ओवर केबल एज वेल. तो यू नो यू आर वाचिंग इट, सडनली चेंज करते हुए बस चैनल आ जाता था, आप देखना शुरू कर देते थे. लाइक एवरी ईद आई रिमेंबर कि वहाँ पे हम साथ साथ लगती थी एंड देन आई यूज्ड टू वॉच इट. लाइक आई स्टिल वॉच इट एंड आई डोंट एंजॉय इट बट आई वॉच इट लाइक गिल्टी प्लेजर मेरा, यू नो. बस मुझे बहुत अच्छा लगता है फैमिली मूवी के. I think that's one of the first movie that we watched together as a family as well. And you know आप सब देख रहे होते हैं, आपकी memories associated होती हैं सारी चीज़ों के साथ, और आपको पता है कि अब मुझे पता है कि हर ईद पे देखी थी. So you know वो thing है. So उस टाइम पे access था इस content का. Now it's just like एक तो वैसे access खत्म हो गया. तुम्हारी फिर क्या होगी favorite movie of all time? My favorite movie of all time, एक तो मुझे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा बहुत अच्छी लगती है. I can watch it any day as well. Yeah, and then I really like पुरानी वही सलमान खान वाली मूवीज़ और शाहरुख खान वाली मूवीज़ जो कि कुछ होता है भी मैं बैठ के देख लूँगी. कल होना हो भी मैं बैठ के देख लूँगी. कभी खुशी कभी गम में बैठ के देख लेती हूँ. हम साथ साथ हैं. आई थिंक एक और मूवी थी जिसमें माधुरी है और सलमान है, हम आपके हैं कौन टाइप्स. हाँ जिसमें उसकी भाभी की डेथ हो जाती है. या सो ऑल वो सारी नचले किसी को याद है. That was such a beautiful. या आई लाइक इस तरीके की म्यूजिकल और वो जिसमें परफॉर्मेंसेज होती हैं वो बहुत अच्छी. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा इज अ रिलेटिवली न्यूअर फिल्म. इट्स 2013. हाँ वो देखी थी दिल चाहता है. वो उसकी सेम वाइब्स थी. हाँ वो भी इट्स वन ऑफ दोस. आई थिंक अगर मैं बॉलीवुड में कहूँ तो माई ऑल टाइम फेवरेट मूवीज आर जब वी मेट, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. आई ऑल्सो आई रियली लाइक दिल चाहता है एंड कभी खुशी कभी गम. Still makes me cry and laugh. What about you?
Sing is King. Oh yeah, Number King is very- one. Only because I feel like वो मैंने इतनी देखी है and when I'm feeling down ना तो मुझे होता है कि I you know never ended up watching it. I'm Really? gonna watch it now. उसका कोई part 2 भी आया था I Sing think is वो मैंने Bling अभी भी तक नहीं है। हाँ वो मैंने अभी तक नहीं देखा but yeah so because I'm so familiar with it तो I feel like वो होता है ना कि जैसे Friends है तो Yeah. I watch Friends वो उस टाइम पे जब I just don't want to feel anything I don't want to consume anything new and I'm so familiar with it कि मैं कहती हूँ comfort कि है ना हाँ, आपका, तो मैं वो बस देखती रहूँ and I eat something with it so वो तो बहुत लोगों ने सिंग इज किंग देखी थी और वो जो तेरी ओ तेरी हाँ वो भी था उसमें. या सो बहुत and my second favorite is going to be Aja Nachle and that is because जब मैंने first time देखी थी वो तो I didn't really understand it the way that I did when I grew up जब मैं मतलब बड़ी हुई and then when I watched it again तो मैंने देखा कि the story behind it is very powerful so that's why that was one of my मुझे तो उसकी favorite स्टोरी ही नहीं याद. ये दोबारा देखनी आजा चाहिए. नचले वाली हाँ. वो जिसमें थिएटर को बचाया थिएटर से वो तो मुझे पता है थोड़ा बहुत पता है ऊपर ऊपर से. इट्स रियली गुड आप My देखिएगा family didn't दोबारा से accept it so she left and बहुत मजे वो किया वापस वो। आई and all that so बहुत अच्छी movie है so that's why that या उसका वो घाघरा वाला गाना उसका है ना. हाँ नहीं घाघरा तो वो वो वाला उसमें माधुरी जवानी का, दीवानी हाँ, वाली वो तो मूवी में नहीं है वाली। घाघरा वाला गाना इसका वो ओरे पिया ओ हाँ हाँ घाघरा वाला तो उसमें है. ये जवानी है दीवानी में है ये जवानी है दीवानी में है या उसमें है? रणबीर वाली मूवी रणबीर वाली मूवी है वो? ये जवानी है दीवानी वाली उसमें हाँ, उसमें उसमें रणबीर जाता है ना वहाँ पे आई काम नो होता है। लेकिन उसकी एक और मूवी भी तो थी जिसमें वो क्या है उसकी भी यही थीम है अब मुझे ख्याल आ रहा है जिसमें इसकी दीपिका है उसमें. तो ये जवानी है दीवानी नहीं एक और What? एक मिनट अब ये सोचना अब ये पड़ेगा सोचना अब पड़ेगा। जिसमें ये अब वो his father always wanted to be him to be an engineer. तमाशा. तमाशा yeah, Oof, yeah. that movie is so That's also a very nice movie, yeah. good. हाँ वो भी बहुत अच्छी मूवी है. I think every single person in this planet will relate to. हाँ और वो उसमें भी वही था that he likes Yeah. story telling and theater and उस Yeah. तरह से. That was such a nice movie. That was a very nice movie, yeah. अच्छी थी. बट वो अभी इस टाइम की है ना ये सारी मूवीज लाइक आफ्टर ये नई है 2010 हाँ नई मूवी है ये ये. रिलेटिवली कभी अलविदा ना कहना भी बहुत अच्छी मूवी थी ऐसे आई आल्सो रिमेंबर दैट मुझे नहीं अच्छी लगी वो. अच्छा मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो कल होना हो मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ बहुत अच्छी मूवी. जब वो कल होना हो वाला गाना लगता था ना मैं लाइक पता नहीं क्या हो रहा है जिंदगी में कल कुछ भी नहीं रहेगा It's a nice yeah movie. it's a really nice movie. हाँ अब जाके घर को एक देखनी पड़ेगी और हॉलीवुड ऑल टाइम I- फेवरेट. आई डोंट हैव अ फेवरेट इन हॉलीवुड एक्चुअली I like that वो मूवी उसका नाम है I think of shit I'm forgetting क्या थी About Time Oh, what a nice movie. it's my I've not all watched time favorite You should watch it. आई विल वॉच Such a beautiful movie. About Time The Age of Adrenaline and I think मुझे recently I watched Purple Hearts वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी है मैंने नहीं देखी बट मैंने सुना है उसका. It's माय really लिस्ट nice. एज वेल मैंने देखनी है but About Time is my all time. time favorite ओ English आई रियली लाइक दैट मूवी वो जो एक और लैंग्वेज में थी सेल नंबर समथिंग Cell Number 7 या ओ ब्यूटीफुल मिरेकल इन सेल नंबर Miracle in Cell. मैंने नहीं देखी. So, आप प्लीज देखें movie. सबसे पहले देखें इट्स वेरी ब्यूटीफुल मूवी हाँ आपकी कौन सी है हॉलीवुड की all time यार I don't think I can answer this question. I don't think I can answer this question. एक तो पता है कि मेरे जहन में नहीं आ रहा. अच्छा कोई ऐसी हॉलीवुड मूवी जो आपने बहुत दफ़ा देखी हो टाइटैनिक और मुझे बहुत अच्छी भी लगती है. I liked it. I like the love story and I really find it gut wrenching and heartbreaking and so it's one of those you know like आपको tragedy से नहीं होती fondness तो उस तरह की थी कि it was such a tragic love story और Romeo Juliet vibe थी. yeah तो वो उस तरह से I think I watched it a lot and उफ पता नहीं I saw अगर बचपन में देखो क्या देखा तो I saw Matilda a lot देखिए and one of the movies I really लॉयन किंग वो भी तो हमारे I think I have seen that movie
वे टू मेनी टाइम्स अपने बचपन के लिए और फिर अपनी बहन के बचपन के लिए। और सरीन ने जितनी वो मूवी देखी है और हमें दिखाई है, रट गई है वो मूवी, बट इट्स सो नाइस, Yeah. सो नाइस। इट्स मतलब उसमें बहुत ज़्यादा थीम्स हैं और इतनी अच्छी बनी हुई है। वो भी इतनी, उसमें भी इतनी सैडनेस होती है आपको, इन मुफासा डाइज एंड एग्जैक्टली वही वाला सीन जो है, ओफ गॉड। Yes. I think even discussing these movies is bringing back so many memories. You know, the time Taking that me we back used Finding to that Nemo time. is so nice. yeah. I think animated movies so बहुत ज़्यादा, Animated like you can movies are watch it best. still any day every day. यूसरा आपने मुझे अभी रिसेंटली एक बताई थी, ड्रैगन समथिंग, जो Dragon वो भी Tales. बहुत अच्छी थी। Dragon. Yeah. क्या नाम था उसका? Wish Dragon. Wish Dragon मैंने देखी है। Yeah, वो भी अच्छी थी। Wish Dragon अच्छी। Tangled is one of my most favorite movies. So nice. और especially उसका वो जो गाना है At last I see the lights, जिसमें वो सारे, it's such a beautiful scene, मुझे आंसू आ जाते हैं because it's so beautiful, because उसने हमेशा बचपन से देखी होती हैं वो lights and then she finally gets to see them and it's just so I also like Frozen as well a lot. Frozen is nice, हाँ। Yeah. और Shrek अच्छी लगी कभी? I don't remember watching Shrek कभी भी, like maybe I have. हाँ, लेकिन उस तरीके से I don't remember कि बहुत अच्छी लगी हो. एक वो भी तो आई थी, द बी मूवी, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। हाँ, अगर The Bee आपने movie भी देखी आई होगी थी। या नहीं। हाँ। इन पे But I've बहुत है यार। consumed more. बहुत है, I've बहुत देखी। consumed more Bollywood than Hollywood. Yeah, अच्छा। because मैंने Hollywood consume करना बहुत late start किया था, and that too on the recommendation of my friends. कि देख लो. अच्छा, what's your recent favorite movie? Not all time. Recent, I've watched Purple Hearts and I really liked it. Okay, yours. I don't know. मैंने actually I've watched so many movies without even looking at their titles. इन दिनों में I'm going through that phase where बस Netflix खोल के ना बस watching तो I don't know, मतलब, and all of them were okay. So I don't know. I don't have a favorite, a recent favorite. पता नहीं मेरे साथ एक मसला, when it comes to movies ना, मैं पुरानी ज़्यादा देखती हूँ, नई कम देखती हूँ बहुत ज़्यादा. एंड नई में आई एक्सप्लोर सीजन्स अ लॉट. लाइक अभी मैंने रिसेंटली अम्ब्रेला अकेडमी का 3rd सीज़न आया था, तो मैंने स्टार्टिंग से सारा देख लिया एंड आई रियली लाइक्ड इट. देन मैंने मसाबा देख लिया. देन वो सारे सीजन्स आ रहे हैं, तो आई एम मोर इंक्लाइंड कि अच्छा वो देख लेती हूँ. व्हेन इट कम्स टू मूवीज मैं बहुत मुश्किल से क्लिक करती हूँ. मतलब मैं देखती हूँ क्या लिखा हुआ है उसमें साइनॉप्सिस में, एंड देन फिर मैं देखती हूँ कि अच्छा कौन सा यॉन बेसिकली आपने भी पूरा 1.5-2 घंटा कमिट करना है या नहीं? हाँ, मेरे से नहीं होता, because If you're ready to follow that story तो तब देखती हूँ, वरना मैं And what about rom-coms? rom-coms I'm always. हाँ, वो तो हर वक्त देख रहे हो. Chick flicks and rom-coms. Yeah. अभी recently I finished Never Have I Ever, वो देखा आप लोगों ने? हाँ, मैंने देखा. I'm up to speed. अब आगे उसका तीसरा. मैंने नहीं देखा सीजन 3. वो भी मैंने देखा. अभी आया ना? हाँ, मैंने भी नहीं देखा. मैंने उसी दिन देख लिया. मैंने इंडियन मैच मेकिंग का सीजन 2 देखना है. हाँ. एंड आई थिंक किसी और का भी लॉक एंड की का सीजन 3 आ गया, मैंने वो भी देखना है. इंडियन मैच मेकिंग डिस्कस करना चाहिए हमें. हाँ, I still have to watch that, guys. Please watch मैं it. season 2 देखूंगी ना, फिर हम देखेंगे. और मैं season 1 and 2 दोनों देखूंगी. हाँ, फिर हम उस I'll पे watch it एक next. स्पेशल एपिसोड That'll be nice. Relatable. Okay, done. What about Darlings, आप लोगों ने देखी? नहीं, अभी नहीं देखी. Same, मैंने भी. पता नहीं यार, जो इंटेंस मूवीज होती है ना, उनसे मुझे कमिट नहीं. और डार्लिंग में ह्यूमर है, बट इट स्टिल आई नो कि अंडरलाइंग थीम इज इंटेंस. तो फिर मुझे होता है कि यार एम आई इन दैट स्टेट ऑफ माइंड. फिर मुझे होता है अब भी नहीं, आई कांट कमिट फॉर समथिंग लाइक Because आप जिस state of सोशल mind में हो- इश्यूज वाली जो मूवी होती है, दे नीड अ स्पेशल Yeah. टाइम टू. आपको मेंटली अब उस जोन में होना बहुत ज़रूरी हो कि यू कैन टेक अ वेरी हार्ड इंफॉर्मेशन. या I'd rather watch sci-fi. आपका मूड ऑफ हो ना, तो अच्छी से अच्छी मूवी भी कभी कभी आपको बुरी लग जाती है. सो समटाइम्स आई डोंट वॉच इट जस्ट सो दैट ये ना हो कि मैं उसको उस हिसाब से जज करूं. बेसिकली ट्रिगर की बात है ना, यू डोंट वांट टू बी ट्रिगर्ड बाय समटाइम्स बाय सोशल इश्यूज एंड समटाइम्स दैट्स नॉट व्हाई यू आर वाचिंग टीवी. हाँ, तो आप लोगों ने इंटरस्टेलर देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी. क्यों? देखेंगे. आई नो इट्स साई-फाई बट इट्स गुड. उसमें इट्स हैज अदर थीम्स एज वेल. बट मेरे साथ तो ये टू कमिट टू अ मूवी. डू वॉच इट. या आई विल वॉच इट. ठीक है, आई थिंक दैट्स या दैट्स इट. मैं भी पूछने की थी, आप लोग कॉफी विद करण देख रहे हैं? नहीं, लोग देख रहे हैं आजकल. मैंने देखा है. The new season is nice. चलिए आप लोग देखें ना, फिर we'll discuss that.
हाँ इंडियन शोज हम बैठ के डिस्कस करते हैं, मजा आएगा। सो आज की हमारी खुशखबरी बाय द वे हम दे देते हैं हाँ कि हम जिम जाना शुरू करें। नहीं हमने शुरू में जब जाओगे ना तब जब हम जाएंगे ना तो हमारी हालतों से इनको पता चलेगा। नहीं, लेकिन देखें ये भी तो हो सकता है कि हमारे अंदर बहुत एनर्जी आ जाए और हम बहुत एक्टिव हो जाएं। सो हाँ, तो फिर तब खुशखबरी देना बनती है ना। हाँ अभी देना थोड़ा एनीथिंग yes next time बेइज्जती हो रही है। No but I think you guys will do it this time, like I mean अब हम अकाउंटेबल हो गए भाई। हाँ, अब ये चीज़ तो करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। ठीक है चले, थैंक यू सो मच for having me again and thank you so much for watching this episode. थोड़ी random थी but I enjoyed it. हाँ, yeah. so we hope you guys did as well. And we will be talking about Indian matchmaking in a light and serious way both. हाँ, because वो कहते हैं ना थोड़ा problematic है show and stuff. So yeah, we'll be doing that. So why don't you guys also go and watch it so that we all can know what we're talking about, because I think otherwise there will be spoilers as well. Yeah. So see you again next time inshallah, and keep watching. And मैं क्या कहती थी, लाइक कमेंट शेयर भूल गया। दूसरा आप बोल रहे हैं। Don't forget to like, subscribe and leave comments about what you think. Yes. Also I would really appreciate कि अगर आपको कोई पार्ट कोई चीज़ अच्छी लगती है तो स्टोरीज़ में भी टैग कर दिया करें इंस्टा पे। हमें ज़रा वो अच्छा लगता है वो sort of feedback कि what part you enjoyed or what you liked, and then we can reshare on our story as well. तो आप फीचर होंगे और हम खुश होंगे। और obviously like we get more traction because of it as well. So thank you once again and Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।